Hello guys, how are you all? I'm Aditya Kashyap, and today is the part 8 of the lecture series which we are continuing. MCQ previous year Hello guys. CPC 1908. I'm Aditya. So guys, I think you are I'm audible to all of you, right? So how are you all? कैसे हैं आप लोग? All good? Hi. Good. So आज हम लोग का पार्ट 8 ऑफ दिस सीरीज है MCQ CPC 1908. So, how's the Joes? All good? Great. So, join the session, guys, and we will start the CPC MCQ series, part 8. Okay. Sorry. Sorry, guys. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज पार्ट 8 ऑफ CPC है 1908. So, as we do before starting the lecture of MCQ, we learn some fact with simple fact of CPC. So the first fact is CPC 1908. It came into force from 1st of January 1909. Okay. It consists of how many section and how many orders? So it consists of 158 section and 51 order. Okay. Now its applicability. So it applicable to whole of India except state of Nagaland and tribal area. And CPC is a Code of Civil Procedure 1908, and it is a procedural law, and it applies to civil cases. And what is civil cases? The cases which are not criminal is civil cases like property, family disputes, contract. These are the, for example, like civil cases. So we are done with the little facts of CPC which we must have to know. Okay, so let's begin the MCQ series of Code of Civil Procedure 1908. Let's start. तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? The question is now visible on your screen, and let's start with the question number 1. Question number 1 कहता है, in which of the following cases has the Supreme Court upheld the validity of Section 51 of CPC? So, इसमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 51 अपहेल्ड किया है? तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है. दिस केस रिलेटेड टू जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन. So the correct answer is option D. We have already seen this question in the previous class. Okay, so Jolly, George, Verghese versus Bank of Cochin, right? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. In which of the following ways can the court not order execution of decree as per section 51 CPC? So according to section 51 CPC, by delivery of any property specifically decreed, इसके तरह हम लोग by this mean we can execute decree of execution, है ना? By attachment and sale of property, it is also clearly mentioned under section 51. By serving someone on the party, so this is not the right way. Okay, by appointing a receiver, so this is correct. So option A, B and D are correct, but B, by serving someone on the party, is not correct, right?
आगे बढ़ते हैं। Which of the following provision deals with enforcement of a decree against legal representative under CPC? So this is clearly mentioned under section 52 of CPC, enforcement of decree against legal representative. So हम लोग जानते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में कब डिक्री एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब जो मेन जो होता है जजमेंट डेटर उसका डेथ हो जाता है ना। सो दिस इज क्लियरली मेंशन अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीपीसी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 55 ऑफ सीपीसी, राइट। सो इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 55 ऑफ सीपीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आगे बढ़ते हैं ना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है? द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री as per section 51 CPC in which of the following ways? So this is by very clearly we have seen that in case of execution of decree as per section 51 CPC, which of the following ways will not followed? So by sending husband or wife to civil prison for restitution of conjugal right is not the correct answer. आगे बढ़ते हैं। Which section of CPC prohibits detention of women in execution of decree for money? So, which section of CPC prohibit arrest or detention of women in decree of money? So, this is clearly mentioned under section 56. Section 56 में जब भी एक एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री रिलेटेड टू मनी होगा तो उस केस में वुमेन को अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन है सेक्शन 56 ऑफ सीपीसी में, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sorry guys. Sorry guys. Let's start. So where were we? We are at question number 7. Na? So in case of women, arrest and detention cannot be done in case of decree of money execution वाला, ठीक है? तो so it is clearly mentioned in section 56 of CPC, right? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? A decree for payment of money, a decree for payment of money passed against a woman cannot be executed. So it cannot be executed by her arrest and detention in prison. We have already seen this. This question asked in a different manner. So relevant section is section 56, right? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। Which of the following statement is false? So this is clearly the same question. Let's move on to ये उसी की बात कर रहा है section 56 का कि in case of women if the decree is related to execution of decree of money then we cannot arrest a woman and detain, है ना, in civil prison। चलिए आगे बढ़ते हैं। Under CPC 1908, no woman shall be arrested and detained in ये सेम है in case of what payment of money dispute, है ना। आगे बढ़ते हैं। Question number 11. In which of the following section of CPC the arrest or detention of woman execution degree money prohibited? ये section 56, right? 56 सेम पूछ रहा है वुमन से, और लेकिन हाँ इसमें 56 में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? सिक पर्सन होगा, माइनर होगा और वुमन होगा, तीनों इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी पास्ड अगेंस्ट अ वुमन
women cannot be executed. So, a decree for payment of money passed against a woman cannot be executed by her arrest and detention in civil prison. Same question, so repetition of question हो रहा है काफी. आगे बढ़ते हैं. So, which of the following statement is incorrect regarding the release of judgment debtor on the ground of serious illness? सो कोर्ट में कैंसल अरेस्ट वारंट सही है, सीरियस इलनेस के केस में कर सकता है कोर्ट. कोर्ट में रिलीज अरेस्टेड जजमेंट डेटर, ठीक है, अरेस्टेड जजमेंट डेटर को ही रिलीज कर सकता है कोर्ट अगर वो अथी हो, अरेस्ट हो गया है तो. स्टेट गवर्नमेंट में रिलीज हिम इफ सफरिंग फ्रॉम कॉन्टेजियस डिजीज, ये भी कर सकता है. A judgment debtor released under this section cannot be rearrested. तो ये तो सिंपल लॉजिक की बात है कि अगर कोई रिलीज किया गया तो ऐसा थोड़ी है कि वो फिर से री अरेस्ट नहीं किया जा सकता. नहीं नहीं, सो दिस इज रॉन्ग. अब आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट and sale in execution of decree can be passed by civil court under. So, under what section it is clearly mentioned? It is mentioned under section 60. So, property liable to attachment and sale in execution of decree can be passed by civil court under section 60 of CPC, right? So, under section 60 of CPC, which of the following property is not liable to attachment? So, property attachment and liable जो होता है वो section 60 में होता है. But कौन सी property liable नहीं होती है? तो the property which has personal service, ठीक है ना? Any right of personal services is not liable in case of attachment and sale of property, है ना? Under section 60. But negotiable instrument, house or building, government security, these things are liable. Even gratuity and pension is not liable, but the salary is liable, है ना? आगे बढ़ते हैं. 24. क्वेश्चन नंबर, हाँ, whether decree is for the payment of sum of money, ठीक है, whether decree is for the payment of sum of money exceeding 5,000 rupees, the period of civil prison. So it is clearly mentioned that it shall not exceed 3 months, right? It shall not exceed 3 months. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. According to section 58 CPC, no detention in civil prison can be ordered. No detention in civil prison can be ordered if the decree is for the payment of an amount. So, if a decree is payment of amount not exceeding 2,000, अगर 2,000 से ज्यादा का नहीं है तो फिर उस केस में डिटेंशन इन सिविल प्रिजन कैन नॉट बी ऑर्डर्ड, है ना? ये सेक्शन 58 है. सो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. वेयर अ जजमेंट डेटर हैज बीन कमिटेड टू सिविल प्रिजन, वेयर अ जजमेंट डेटर हैज बीन कमिटेड टू सिविल प्रिजन, ही मे बी रिलीज्ड देयर फ्रॉम. सो ही मे बी रिलीज्ड देयर फ्रॉम बाय स्टेट. ये किस केस में होता है? सीरियस इलनेस के केस में होता है, हम लोगों ने देखा था, है ना? सो व्हाट वर द ग्राउंड? द ग्राउंड्स आर बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, राइट? सेकेंड, ये भी सही है. बाय द कमिटिंग कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस इलनेस, ये भी सही है. बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज, ये भी सही है. सो ऑल ऑफ द विल बी द ग्राउंड, ठीक है, to release the judgment debtor on the ground of serious or contagious disease. Okay. आगे बढ़ते हैं. A judgment debtor is arrested in execution of decree for payment of money and pay the decretal amount and arrest cost to the officer arresting such officer. So such officer shall at once release him, है ना? अगर कर देने के बाद ऑब्वियसली अगर वो सब कुछ कर ही देता, पे कर देता, तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा. वेरी सिंपल, राइट? Hope you are clear. So we have done question number 21. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Slowly and slowly we will learn CPC with the help of MCQ which was asked in previous year, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Which section of CPC prohibit, ठीक है, which section of CPC prohibits arrest or detention of women
डिक्री ऑफ मनी से रिलेटेड, तो ये हम लोगों ने काफी देख लिया है। तो दिस इज क्लियरली मेंशन अंडर सेक्शन 56, राइट। हम लोगों का याद है, जब भी वुमेन के केस में अगर डिक्री ऑफ मनी से रिलेटेड कोई है एग्जीक्यूशन डिक्री, तो वो सेक्शन 56 में क्लियरली मेंशन है कि उस केस में अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन कैन नॉट बी डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड a warrant of arrest against a judgment debtor may be cancelled? So I think we are very clear on that. Serious illness and contagious disease, right? आगे बढ़ते हैं. Who pay the subsistence allowance in case of arrest of a judgment debtor for execution of decree? So the subsistence allowance in case of arrest of a judgment debtor for execution of a decree shall be done by decree holder. Obviously, decree holder will do. And who is decree holder? जिसके फेवर में डिक्री आया है. And who is judgment debtor? जिसके अगेंस्ट में डिक्री होल्ड पास हुआ है. ठीक है ना? And you are clear about the definition clause related to these two words, right? I have already told you in the classes. And if you know, please write in the comment section. Thank you. आगे बढ़ते हैं. Under section 58 of CPC, person detained shall be released from detention on the amount mentioned in warrant being paid to the officer in charge of civil prison, right? So this is right. This is correct. Okay. So किसको पे करना पड़ा? The officer in charge of civil prison. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Which of the following property is expressly exempted from attachment under section 60 CPC? So we have clearly seen that tools of an artisan is clearly exempted from attachment under section 60 CPC. सैलरी ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय ये होगा, एग्रीकल्चरल लैंड ये भी लायबल होगा, बैंक डिपॉजिट ये भी लायबल होगा, बट टूल्स ऑफ एन आर्टिशन, क्योंकि अगर वो उसको अगर मतलब क्या बोलते हैं अटैच कर लिया जाएगा तो फिर उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी ना. दिस इज द मतलब उसके लाइवलीहुड के लिए वो एक बेसिक एमिनिटीज है, तो आप उसको अटैच नहीं कर सकते हैं, राइट. इसीलिए क्लियरली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टूल्स ऑफ एन आर्टिशन. आगे बढ़ते हैं. Under Section 60 CPC, which portion of judgment debtor's salary is exempted from attachment? So, अब इसमें हम लोग किस पे चले जाएं? Entire salary, one half of salary, first 1,000 and two-third of the remainder. So, the correct answer is first 1,000 and two-third of the remainder is exempted from ठीक है attachment. ठीक है, under Section 60. आगे बढ़ते हैं. द सैलरी ऑफ अ जज, ठीक है, द सैलरी ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज, सो ये क्या होगा? एक सेकेंड गाइस. हाँ, आगे बढ़ते हैं, सॉरी. सो इट इज नॉट अटैचेबल. ओके, द सैलरी ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट अटैचेबल. आर यू क्लियर टिल नाउ? ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना. Which one of the following cannot be attached in execution of decree? So, yeah, the question is not clearly visible. हाँ, सॉरी, एक सेकेंड गाइस. हाँ, सो अरे यार, स्टाइपेंड एंड ग्रेच्युटी अलाउड टू पेंशनर, है ना, ये नोट कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, राइट. कल से मैं थोड़ा इस पे वर्क करूंगा, ये थोड़ा ऊपर रहे तो सही रहेगा, है ना. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 60 सीपीसी, ठीक है, प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अटैचमेंट. सो फ्यूचर मेंटेनेंस, है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है. एरियर ऑफ मेंटेनेंस, अमाउंट ड्यू अंडर अ डिक्री, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये फ्यूचर मेंटेनेंस को प्रोटेक्ट करता है ना. 60 में, 60 में क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, है ना. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अटैचमेंट ऑफ पेंशन?
सो अटैचमेंट ऑफ पेंशन से रिगार्डिंग क्या करेक्ट है ना? सो पेंशन इज फुल्ली अटैचेबल, यस, नो। पेंशन इज अटैचेबल आफ्टर क्रेडिट टू बैंक, पेंशन इज नॉट अटैचेबल इवन आफ्टर क्रेडिट, है ना? सो पेंशन इज नॉट अटैचेबल इज करेक्ट इवन आफ्टर क्रेडिट इन अटैचमेंट ऑफ पेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अंडर सेक्शन 60 सीपीसी, टूल्स ऑफ आर्टिसन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट बिकॉज, ये हम लोगों ने बता ही दिया था क्यों, बिकॉज दे आर द इसेंशियल फॉर लाइवलीहुड, है ना, राइट? इसीलिए हम उसको एग्जेम्प्ट करते हैं फॉर अटैचमेंट से। आगे है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायबल टू अटैचमेंट? तो इनमें से क्या लायबल है अटैचमेंट के लिए? तो नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, ठीक है। कुकिंग वेजल, ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। एंड स्टाइपेंड ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर। सो बुक ऑफ अकाउंट, which of the following is liable to attachment? So book of account is liable for attachment. Necessary wearing apparel, cooking vessel, stipend of military officer. So these are the basic essential for livelihood, है ना? तो so these cannot be attached, right? आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंसेस, ये हम लोगों ने देखा था, ये नॉट अटैचेबल होता है फ्यूचर मेंटेनेंस, है ना? आगे बढ़ते हैं। अंडर सीपीसी, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एग्रीकल्चरिस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट? तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो होगा एग्रीकल्चरिस्ट का, वो एग्जेम्प्टेड होगा अटैचमेंट से अंडर सेक्शन 60? तो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं, ये तो अटैचेबल है। कैटल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, कैटल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इज exempted, right? Money received from sale of crops, no, it is not exempted. Bank deposit is also not exempted. So only cattle used for agriculture is exempted from attachment under section 60 of CPC, right? So you guys can share your experience regarding the class in the comment section. It will be very helpful for us to understand the, ठीक है, queries। आगे बढ़ते हैं 36, what is the nature of the list provided under section 60 CPC? So what is the nature of the list provided under section 60 CPC? So is it exhaustive? Yeah, illustrative, discretionary and temporary. So the nature of the list provided under section 60 CPC is exhaustive। जो ये अपने आप में exhaustive है, ठीक है ना? इसमें जो मेंशन है वही लायबल होगा, ठीक है ना, अटैचमेंट के लिए, बाकी अदर कुछ नहीं। सो इट इज एग्जॉस्टिव, राइट? The exemption of salary under section 60 CPC applies to, so it applies to both government and private employees, right? आगे बढ़ते हैं। Which of the following allowance is exempted from attachment? So we have already seen this, that it is exempted from attachment. Dearness allowance uh, exempted. House rent allowance exempted. Traveling allowance exempted. So आगे बढ़ते हैं। Attachment of salary can be continued for a maximum of 24 months. Okay, so attachment of salary can be continued for a maximum of 24 months. That is 2 years. Question number 40. The protection given under section 60 CPC is based on principle of, the protection given under section 60 CPC is based on principle of public policy. Okay, the protection is based on principle of public policy. आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी आर बाइंडिंग ऑन, so it is binding on the court of civil judge, the court of district judge, the court of high court, and all of the above. So all of the above. So provision of section 80 CPC are binding on all of the above, right?
सेक्शन 80 बात क्या करता है, नोटिस की बात करता है ना. सो इट दैट्स व्हाई इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट ऑफ सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज एंड हाई कोर्ट. ठीक है. एंड नोटिस टू गवर्नमेंट होता है जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. व्हाट डज द सेक्शन 80 सीपीसी डेल्ट विद. सो इट requirement of notice. हाँ, this is the correct answer. Requirement of notice for institution of suit against government. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. In case of suit against the central government relating to railways, prior notice in writing is required to be delivered to. So it is delivered to the general manager of railway. है ना. Prior notice is must in case of government. है ना. This is mentioned under section 80, right? आगे क्वेश्चन है. A notice A notice in writing under Section 80 CPC has been given to, so it is given to secretary to central government in suit against the government. ठीक है. सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट होगा तो सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग देंगे. ठीक है. ना कि प्रेसिडेंट को, ना ही सेक्रेटरी ऑफ रेलवे को. है ना. जब गवर्नमेंट के रिगार्डिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो होंगे उनको देंगे नोटिस अंडर सेक्शन 80 एंड इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन. ठीक है. अगर आप लोग ये नहीं करोगे, अगर इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो सूट इज रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा. ठीक है. अब आगे है. वेयर अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और द स्टेट. ठीक है. फॉर एन एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर. Execution under Section 82 CPC shall not be issued unless decree remain unsatisfied for, so it remain unsatisfied for 6 months. Okay. Where a decree is passed against the Union of India or the state for an act done in official capacity of the officer, execution under Section 82 CPC shall not be issued unless decree remain unsatisfied for 6 months. Right? Sorry, 3 months. 3 months. Right answer is 3 months. आगे बढ़ते हैं. In what capacity may the court aid government as a party under Rule 2 of Order 27A CPC? So, in what capacity? So, as a defendant. Okay. So, government will aid as a defendant under Order 27A CPC. ठीक है ना. In a suit against a state government, who may sign the plaint on the behalf of government? So, a person appointed by general or a special order of the government. ठीक है. He will sign on behalf of government the plaint. Okay. उसके बाद क्वेश्चन है. How much time how much time period can be extended in aggregate by the court under Rule 5 of Order 27 CPC? So, the correct answer will be not exceeding 2 months. Okay. So, the correct answer is not exceeding 2 months. So, how much time period can be extended in aggregate by the court under Rule 5 of Order 27 CPC? So the time period is 2 months, not exceeding 2 months, right? So we are done with this question. Let's move on to another question. Rule 6 of Order 27. ठीक है. Rule 6 of Order 27 CPC dealt with. So Rule 6 of Order 27 deal with procedure in suit against public official. So it deal with procedure in suit against public official, right? अब 23 पे आते हैं. 23 कहता है which of the following privilege is not given to the public official uh, sued in respect of an act done in official capacity. So
his properties shall not be liable to attachment. So this privilege is not given, ठीक है ना, to the public officer. His properties shall be liable to attachment. आगे बढ़ते हैं. If a suit not seeking urgent relief is filed against a public officer without prior notice, the court shall return the plaintiff. Okay. If a suit not seeking urgent relief is filed against a public officer without prior notice, the court shall return the plaint. Obviously, क्योंकि it is a mandatory provision to give notice, है ना? And the time period not exceeding 2 months. Okay. Sorry. आगे बढ़ते हैं. Question number 25. Under which provision of CPC? Under which एक second. Under which provision of CPC can an ambassador be sued? So, Section 86 of CPC, this provision is related to an ambassador under which he can be sued. Okay, sued. So, the right answer is Section 86. 86 के अंदर एक एम्बेसडर को सू किया जा सकता है, ठीक है ना. Suit against a foreign ruler, ambassador, and envoy. This is mentioned under Section 86 of CPC. Suit against foreign ruler, ambassador, and envoy. ठीक है. 86 we have to keep in our mind. Sorry guys, थोड़ा सा चलो एडजस्ट कर लो आज के लिए. Provision regarding interpleader suit, ठीक है. Interpleader suit has been incorporated in which section? So this is very important question. Provision regarding interpleader suit is mentioned under section 88 of CPC. ठीक है. So 86 is talking about suit regarding envoy, ruler, and ambassador. But 88 talks about interpleader suit. Okay, 88 interpleader suit. So provision relating to interpleader suit are contained in. So it is contained under section 88 of CPC and order 35 of CPC. So both order 35 also talk about interpleader suit and section 88 talks about interpleader suit, right? Now question for an interpleader suit, which condition is not necessary? For an interpleader suit, which condition is not necessary? तो पेंडिंग सूट एडजुडिकेटिंग राइवल्स क्लेम इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है. पेंडिंग सूट्स adjudicating rival claim is not necessary. Interpleader suit is a suit. Interpleader suit is a suit instituted by a person who has no interest in the subject matter. So, interpleader suit is a suit instituted by a person who has no interest in the subject matter. And relevant section is section 88 and relevant order is order 35 of CPC. Right? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. A person may sue a foreign state. A person may sue a foreign state only with the consent of a central government. A person may sue a foreign state only with the consent of central government. And the provision related to section 86. Okay, आगे बढ़ते हैं. Which of the following cannot institute a suit in Indian court? Which of the following cannot institute a suit in Indian court? So, alien enemy residing in India without permission of central government cannot institute a suit in Indian court. ठीक है ना. एलियन enemy के पास ये राइट नहीं है, obviously. Very common, very basic. Which of the following statement is true? So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हम लोग देखते हैं. Alien enemies residing in India
कैन नेवर सू, ठीक है। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन, है ना। एलियन एनिमीज residing in India may sue with the permission of central government. So this is true. Alien enemies may sue with permission of state government. नहीं, alien enemy can only sue in the case when he may be permitted by the central government. Alien enemy can sue in any court. ये भी wrong है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या बात कर रहा है सेक्शन 89। हाँ, सेक्शन 89 CPC was inserted in which year? So section 89 CPC was inserted in year 1999. Very important year for purpose of civil procedure code. So 1999 में section 89 of CPC was instituted. Okay. So what it mentions? So section 89 talks about settlement of dispute outside the court. So settle why this provision was added to a speedy trial, है ना, to come मतलब settle the dispute without a court intervention, मतलब कि जल्दी से settle कर लेना to delivery of judgment, ठीक है। So section 89 CPC was inserted in the year 1999, and what it states? It states settlement of dispute outside the court, ठीक है, mainly arbitration, conciliation, adjudication। आगे बढ़ते हैं। The court under section 89 clause 1 CPC can refer disputes for, so it can refer dispute to, I have already told you, mediation or lok adalat, arbitration or conciliation or mediation. So all are the option available under section 89 1 CPC, which talks about settlement of dispute outside the purview of court. Okay, आगे बढ़ते हैं। Supreme Court laid down law on ADR, alternate dispute resolution, and Section 89 CPC in which case? So this is a very important case of Apcon Infrastructure Limited versus Cherian Warke, ठीक है। Apcon Infrastructure Limited versus Cherian Warke. So in this case, Supreme Court laid down law on ADR and Section 89 CPC, right? Which mode of settlement is not provided under Section 89 CPC? So, arbitration it is provided, conciliation it is provided, negotiation is not provided, ठीक है ना? Mediation is provided. So, the correct option is option number C. ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Where element of settlement exist, the court may refer parties for. So the court में the clear ठीक है, the element of settlement exists, the court may refer parties to arbitration, conciliation and mediation. Very simple. आगे बढ़ते हैं। And it is clearly mentioned under section 89 of CPC, and which year it is incorporated in the code of civil procedure. So the year was 1999, and in which case the law related to ADR and section 89 let down by the Supreme Court. So the famous case was Afcon Infrastructure Limited versus Cherian Workers. So this is the crux of section 89 CPC. आगे बढ़ते हैं, है ना। ए डिपोजिट ज्वेल विथ बी, ठीक है ना। ए ने डिपॉजिट किया ज्वेल विथ बी एज एजेंट, ठीक है। सी क्लेम ज्वेल्स फ्रॉम बी एलिजिंग रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग बाय ए, ठीक है ना। देन बी कैन क्या कर सकता है? सो वी कैन नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लेडर सूट, है ना। बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लेडर सूट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Section 89 of CPC, Section 89 of CPC deals with, तो हम लोगों ने देख लिया है ये क्या है, settlement of dispute outside the court by means of mediation, arbitration and conciliation, but not negotiation, right? Provision for settlement of dispute outside the court is provided under section, so very easy, we have already seen it, 89. Okay.
अब क्या है यार, क्वेश्चन में ना आज दिक्कत हो रहा है देखने में। 89 ये सो विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील विद सेटलमेंट, ये तो सिंपल है, आउटसाइड द कोड, हम लोगों ने देख ही लिया है, सेक्शन 89, राइट। So this is the last part of today's session. Provision regarding interpleader suit has been incorporated in which section? So we have already seen section related to interpleader suit. So interpleader suit is clearly mentioned under section 88 of CPC, right? Provision relating to interpleader suits are contained in section 88 of CPC, and order we have already seen that it is mentioned under clearly order 35 of CPC. And for an interpleader suit, which condition is not necessary? So for an interpleader suit, pending suit adjudicating rival claim is not necessary, right? अब आगे बढ़ते हैं। इंटरप्लीडर, एक सेकेंड यार, interpleader suit is a suit instituted by person who has no interest in subject matter. So the person who has no interest in subject matter will file the interpleader suit, and it is mentioned under section 88 and order 35 CPC. So uh, this is all for today's CPC MCQ series part 8. Hope you find it helpful and interesting, and it add something to your knowledge, I hope. So guys, if you like my effort, if you like my explanation, if you like my work, then please do like, share and subscribe. इससे आपका कुछ नहीं जाता है. It will appreciate my efforts. Thank you very much for joining the session. This is Aditya Kashyap signing out. Bye.